Live from New Delhi, you're watching DD India News Hour, India's voice to the world. I'm Ramesh Ramachandran. Coming up in the next 1 hour. Prime Ministers of India and Singapore hold talks, elevate their ties to a comprehensive strategic partnership, sign 4 pacts. Indian leader calls on Singapore's president. Another school shooting in the US leaves 4 dead and 9 injured. A 14-year-old suspect is being charged as an adult with murder. And Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu doubles down on control of Gaza's border with Egypt. The US pushes for a new plan to break the deadlock with Hamas. India's Prime Minister Narendra Modi interacted with top business leaders in Singapore on Thursday. They discussed about ways to deepen economic linkages. The Prime Minister highlighted the reforms underway in India which would encourage investment and innovation. His meeting with Singaporean CEOs aimed to deepen the strategic partnership between India and Singapore. Singapore is India's largest trading partner within the Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN, and the 6th largest trade partner worldwide. It was also the leading source of foreign direct investment in the last financial year, with an investment of $11.77 billion in 2023. Singapore has been a long-term investor in India. So a new chapter has been written in India-Singapore ties with the establishment of a comprehensive strategic partnership. India's Prime Minister Narendra Modi and his Singaporean counterpart Lawrence Wong held a bilateral meeting on Thursday. The two leaders reviewed the bilateral relationship. They called for expanding the trade and investment flows between the two countries. The two leaders reviewed the cooperation in defense and security, maritime domain awareness, education, AI, fintech, new technology, science and technology, and knowledge partnership. They called for strengthening connectivity to boost economic and people-to-people ties and an acceleration in green corridor projects. The two leaders also discussed the outcome of the second India-Singapore Ministerial Roundtable held in Singapore in the month of August. गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आपके प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद ये हमारी पहली मुलाकात है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है 4G के नेतृत्व में सिंगापुर और अधिक तेजी से प्रगति करेगा। एक्सेलेंसी, सिंगापुर केवल एक पार्टनर देश नहीं है। सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। हम भी भारत में अनेकों सिंगापुर बनाना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच जो मिनिस्टरियल राउंड टेबल बनी है वो एक पाथ ब्रेकिंग मैकेनिज्म है। India and Singapore exchanged 4 documents in the areas of digital technologies, semiconductor ecosystem, health and medicine, and education. The MOU in digital technologies will boost cooperation between India and Singapore in digital public infrastructure, cybersecurity, 5G, and emerging technologies such as supercomputing, quantum computing, and artificial intelligence. The MOU on semiconductor ecosystem partnership will encourage cooperation in semiconductor cluster development and cultivation of talent in semiconductor design and manufacturing.
Dialogue mechanisms set up under this MOU will facilitate investments by Singapore's companies in India. The Pact on Health and Medicine aims to promote closer cooperation in human resource development in healthcare and pharmaceuticals. It will complement the efforts to promote Indian healthcare professionals in Singapore. The fourth and last agreement is linked to educational cooperation and skill development. India and Singapore have an active collaboration in the area of skill development. The MOU will complement those ongoing initiatives. Earlier, Prime Minister Modi was accorded a ceremonial reception at Singapore's Parliament House. The Prime Minister signed the visitor's book kept there. Prime Minister Modi called on Singapore's President Tharman Shanmugaratnam. The Prime Minister also met former Prime Minister of Singapore, Goh Chok Tong, who is now the Emeritus Senior Minister of that country. The two Prime Ministers visited AEM Holdings Limited, a semiconductor manufacturing facility. They held discussions with the stakeholders on opportunities for collaboration between India and Singapore in the field of semiconductor. Students from the World Skills Center of the Eastern Indian state of Odisha welcomed Prime Minister Modi at the semiconductor company. The students are doing their internship there. And DD India's Akshay Dongre spoke to the chairperson of AEM Holdings about future collaboration. The Prime Minister of India is visiting Singapore, and one of the key highlight of this visit is going to be technology of semiconductors. In fact, we are at the AEM Holdings and we have the chairperson with us. Sir, thank you so much for speaking with us. How do you see the future as far as the relation between the two countries are concerned and the role that semiconductors can play? Well, if you look at the Indian diaspora across the world, it's very clear to see that the leaders in semiconductors are there. How we can collaborate, obviously, this change in a way that impacts Moore's law and advanced packaging creates opportunity for both nations. Prime Minister Modi's visit here is very apt because that signals that symbiotic relationship where it starts with the business relationship, the investments. So all stakeholders have to benefit in this relationships. So you are part of the semiconductor industry in Singapore. How is the industry looking at the India's push as far as the ambitions to become a manufacturing hub? Well, it's absolutely the right push. There are two ways, and I call it two types of investments you got to make. One is the journey that Singapore took in terms of first getting into electronics manufacturing, assembly, making sure that the electronics demand is local in terms of its production, and then bringing the chips in from a logistics supply chain perspective. At the same time, building up the infrastructure for more advanced semiconductor manufacturing, which requires clean power, water, and then of course the ecosystem of chemical producers as well. So that will take time. Then there's the human capital development, right? So there has to be the technicians, the supervisors, the people who understand how to problem solve from a process improvement perspective and continuous improvement. That all needs to be built up in scale as well. In the last few decades that we have seen, there have been only limited countries that have been seen as the manufacturing hubs or places of innovation as far as the semiconductor technology is concerned. Most of them located in Southeast Asia or in the region.
But now new players are coming up. So how can the collaboration take place, especially when we talk about India? What kind of potential that you see in the Indian market as well as the Indian manufacturing industry? Well, it's part of a new globalization, right? So you see a lot of high-end electronics, mobile companies moving to India. It's all public, right? They're shifting to India. So that shift is actually a very important end market because they are consumers of semiconductors. Absolutely. So the more electronics assembly and production that India has, the more it will have an end market for semiconductors. Right. So you got to think about that ecosystem because logistics also plays a part in it. Chairman of AEM Holdings and talking to us about the semiconductor market that is its present and the future of collaboration that can take place between India and Singapore as far as the semiconductor industry is concerned. With camera person SP Dubey, Akshay Dongre, DD India. And Akshay Dongre also spoke to the CEO of AEM Holdings. Take a listen. The CEO of AEM Holdings, Amy Liang. Ma'am, thank you so much for speaking with us. Semiconductors is a very interesting term. In fact, a lot of people are interested to know more about semiconductor industry, especially in India, a country with the largest population now eyeing at a semiconductor industry with a lot of seriousness. So how do you see the semiconductor industry evolving now in today's day? Semiconductor industry is more exciting than ever, and the collaboration between Singapore and India are really helping to fulfill that need, and I'm really excited to be part of this journey. Ma'am, how does the Singapore semiconductor industry is viewing India right now? India has lots of consumers and it's a great market to access, but more importantly, there's huge amount of engineering talent that we can collaborate to innovate together. And I think we have great opportunity to collaborate to develop solutions that unique to India. How can the Indian companies that are also manufacturing semiconductor in a way are part of the ecosystem? How can the two countries, collaborate in the advanced manufacturing? India has lots of histories and years of experience in chip design, and as equipment suppliers like AEM, we work closely with chip designers very early on. I think given the new emerging nature of semiconductor industry in India, that early collaboration, so we can develop technology ahead and become trendsetter in test technology. What else is the expectation as far as the Singapore industry is concerned from India in terms of the collaboration? I think we need to get to know more, access to the company, and there are great examples that we started working with the India ecosystem. Visit like Prime Minister Modi's great example. We need to continue to expand our interactions with the technology companies to accelerate the collaboration. Thank you so much, ma'am. So we just spoke to the CEO of AEM Holdings, and looking at the important role that semiconductors play as far as the present technology and the future technology is concerned, it is absolutely important that more and more countries come together and collaborate as far as this crucial technology is concerned. The camera person SP Dubey, Akshay Dongre, DD India. India's Ministry of External Affairs briefed journalists in Singapore on Prime Minister Modi's visit to that country. Secretary East Jaideep Mazumdar said the Prime Ministers of India and Singapore discussed regional and global issues. Apart from bilateral relations over talks spanning yesterday and today, both leaders exchanged views on regional and global issues, including India's Act East policy and the centrality of ASEAN in this policy. The ministry spoke about the multiple agreements signed between the two nations, including cooperation in digital ecosystem, healthcare, and more. 4 MOUs were exchanged, and these are in cooperation in semiconductor ecosystem, in digital technologies, in skill development and education, and in healthcare. The next stage in our bilateral relations has been set by the India-Singapore Ministerial Roundtable that met recently and which identified 6 pillars of our
futuristic cooperation, and the above 4 MOUs address 4 of those 6 pillars. The inaugural International Solar Festival 2024, hosted by the International Solar Alliance, is being held in New Delhi. In his message, India's Prime Minister Narendra Modi lauded the alliance for inspiring policy and action. In such a short time, the membership of ISA has reached a milestone of 100 countries. Additionally, 19 more countries are ratifying the framework agreement for attaining full membership. The growth of this organization is important for the vision of one world, one sun, one grid. Friends, in the past few years, India has taken many massive strides in green energy. We were the first G20 nation to achieve the Paris commitments in renewable energy. The remarkable growth of solar energy is key reason in making this possible. The Prime Minister says that the event brings the world together to celebrate the sun. He also said that popular mantras in ancient Indian scriptures called the Vedas are about the sun. The Vedas were texts composed thousands of years ago. One of the most popular mantras of the Vedas is about the sun. Even today, millions of Indians chant it daily. Many cultures across the world have respected the sun in their own ways. Most regions also have festivals related to the sun. This International Solar Festival brings the whole world together to celebrate the sun's impact. This is a festival that will help us build a better planet. India's Prime Minister Modi, in a social media post on X, lauded research highlighting the impact of efforts like the Swachh Bharat mission. He said access to proper toilets plays a crucial role in reducing infant and child mortality. He termed clean, safe sanitation as being a game changer for public health, and he expressed happiness that India has taken a lead in this. Switzerland has advanced its proposed free trade deal with India by submitting it to Parliament for review. The agreement aims to expand Swiss exports to India by eliminating tariffs on industrial products. In return, India is set to receive significant investments worth $100 billion over 15 years from Switzerland and members of the European Free Trade Association, namely Iceland, Norway and Liechtenstein. India's Finance Minister Nirmala Sitharaman emphasized that simplifying tax compliance for citizens is a key objective for the government. Her remarks came during a special address on Finance Minister's Insight Future Path, hosted by the Revenue Bar Association in Chennai on Thursday. Revenue is the last consideration with which every budget set of meetings happen. You might think I'm not saying the truth, but this is the hard truth I'd like to put before you. Yes, we need to raise revenue. And during the budget consultations that I've had, several of them happen with the department, several of them happen with the Prime Minister's office and Prime Minister himself. Revenue raising comes later. Simplifying and easing compliance on the taxpayer comes first.
All right, now take a look at what else is making news around the world. Ugandan Olympic marathon runner Rebecca Cheptegei died on Thursday, days after she was set on fire by her boyfriend. She had suffered more than 75% burns in the attack. Cheptegei had finished 44th in Paris and was staying at a house in Kenya at the time of the attack. Australia expressed its support for Japan's sovereignty in the Indo-Pacific region during a meeting of their foreign and defense ministers on Thursday. This comes after a Chinese military aircraft flew over the Danjo Islands for around 2 minutes last week. Police in Germany killed a suspect who fired shots outside the Nazi documentation center in Munich on Thursday. The center is located near the Israeli Consulate General in the city. Colombia's President Gustavo Petro seeks to investigate the $11 million purchase of Pegasus spy software. Petro claims the software has been used as a spyware during the previous administration to spy on opposition politicians. Still to come on DD India News Hour. Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu sets conditions for leaving Gaza. And US presidential candidate Kamala Harris's campaign accepts rules for debate with Trump. Complex issues, hidden agendas, twists and turns, strategic games. We think all dots are linked. We just need to connect them. Join me every week as I connect the dots to unravel hidden designs in statecraft, mysteries, and decode issues that matter to you. Watch Connecting the Dots with me at these times on DD India. You're watching DD India News Hour. I'm Ramesh Ramachandran. To West Asia now, Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu has reiterated that his government will accept a long-term ceasefire in Gaza only if it ensures that a border region between Gaza and Egypt is permanently closed to the Hamas, preventing the group from using it as a vital supply route. Netanyahu was referring to the Philadelphia corridor. He cited concerns that international pressure would prevent Israel from regaining control of the area in future. Hamas. All three goals: destroying Hamas's military and governing capabilities, releasing all our hostages, and ensuring that Gaza does not become a threat to Israel anymore. And all these require standing firm on the things that will ensure the achievement of these goals. And with God's help, and with our people's will, and with the courage of our soldiers, we'll achieve all goals. And all three of those goals, all three of them, go through Israel's control of the Philadelphia corridor. And it's obvious why. You want to destroy Hamas's military and governing capabilities, you can't let Hamas rearm. It's obvious. So you have to control the corridor. Meanwhile, Hamas lashed out at Netanyahu for attempting to sabotage a potential agreement by refusing to vacate the Philadelphia corridor in southern Gaza. Meanwhile, the United States says it will put forward a fresh proposal for ceasefire in a bid to overcome the prolonged stalemate between Hamas and Israel. The proposal seeks to address core issues that have hindered progress in negotiations. Israel's military has released footage of a tunnel where the remains of 6 hostages were discovered. The news sparked widespread mourning, with thousands gathering in Jerusalem to express their grief and outrage. The incident reignited protests for demanding that Prime Minister Netanyahu take decisive action to bring home the remaining hostages.
The World Health Organization will begin polio vaccinations in southern Gaza from Thursday. This after it conducted a vaccination campaign in central Gaza. Over 3 days, more than 187,000 children up to 10 years old were vaccinated in central Gaza. Horror struck a high school in the U.S. state of Georgia on Wednesday when a 14-year-old student opened fire, killing 2 students and 2 teachers before surrendering. Police said that the teenage suspect surrendered immediately and will be charged as an adult with murder. The accused was investigated last year for threatening to carry out a school shooting. The latest shooting was the first of the new school year in the United States and served as a stark reminder of the threat of gun violence in schools and colleges across the nation. The U.S. has seen hundreds of shootings at schools and colleges in the past 2 decades, with the deadliest resulting in over 30 deaths at Virginia Tech in 2007. The U.S. government said in a statement that President Joe Biden had been briefed on the shooting and that his administration will continue coordinating with federal, state, and local officials. White House spokesperson Karine Jean-Pierre said school shootings are not normal and called on the legislature to pass a law to ban assault weapons and take other such measures. This is not normal. Students and teachers deserve to know that their schools are safe. They should focus on learning, not lockdowns. While the president and vice president have taken historic action to reduce gun violence, more must be done to keep our schools and communities safe. We continue to call on Congress to do something, We need universal background checks. We need to ban assault weapons and high-capacity magazines, require safe storage of firearms. U.S. presidential candidate Kamala Harris called the shooting a senseless tragedy. This is just a senseless tragedy on top of so many senseless tragedies. And it's just outrageous that every day in our country, in the United States of America, that parents have to send their children to school worried about whether or not their child will come home alive. It's senseless. It is, we've got to stop it. And we have to end this epidemic of gun violence in our country once and for all. All right, now take a look at some of the U.S.'s deadliest shootings in more than 2.5 decades. On 20th April 1999, 2 teenagers were killed. They killed 12 students and 1 teacher at Columbine High School while wounding 24 others. 8 years later, on 16th April 2007, a South Korean student killed 32 people and wounded 33 before committing suicide at the Virginia Tech Institute. Then in 2012, a 20-year-old shooter killed 20 children and 6 adults at Sandy Hook Elementary School before taking his own life. 6 years later, on 14th February 2018, a former student killed 14 students and 3 staff at Marjorie Stoneman Douglas High School. On 18th May 2018, a 17-year-old student killed 10 people, including 8 students, at Santa Fe High School in Texas. An 18-year-old gunman killed 19 students and 2 teachers at Robb Elementary School in Uvalde, Texas on 24th May 2022. U.S. presidential candidate Kamala Harris has agreed to debate rules, including muted microphones when a candidate is not speaking. Her debate with Donald Trump, scheduled for 10th September on ABC News, marks the first face-off between the two since Harris replaced Joe Biden on the Democratic ticket. The Harris campaign, eager for a fair exchange, is pushing for moments when the mics could be unmuted to allow for direct responses.
Meanwhile, Trump's campaign announced on Wednesday that it had raised $130 million in August, ending the month with $295 million in cash reserves. This figure, while impressive, marked a slight dip from July when the campaign collected $138.7 million following a dramatic assassination attempt on Trump. At the end of July, the campaign had raised $327 million. The July fundraising surge came amidst intense scrutiny and challenges. Notably, the Democratic campaign led by Vice President Kamala Harris outpaced Trump's fundraising efforts during that period, highlighting a competitive financial landscape in the presidential race. Republican former lawmaker Liz Cheney said on Wednesday that she will vote for Democratic nominee Kamala Harris, calling Donald Trump a quote-unquote danger. Liz Cheney revealed her decision during a panel at Duke University and reiterated her warnings of the dangers of a second Trump term. Citing the threat posed by Donald Trump, Cheney emphasized the importance of preventing his return to power. She declared her support for Harris, urging voters to avoid write-in candidates, particularly in crucial swing states. And now to updates on the Russia-Ukraine conflict. Russia's President Vladimir Putin delivered a keynote speech at the Eastern Economic Forum on Thursday. The forum is an annual economic conference with representatives from more than 40 countries. Speaking on Ukraine's incursion, the Russian leader said that India, China and Brazil could act as mediators in potential peace talks over Ukraine. We respect our friends, partners, who I believe are sincerely interested in resolving all issues related to this conflict. This is primarily the People's Republic of China, Brazil, India. I'm constantly in contact with our colleagues on this issue. And I have no doubt that the leaders of these countries, we have a trusting relationship with them, sincerely strive to help understand all the details of this complex process. Meanwhile, Ukraine's President Volodymyr Zelensky on Thursday asked the parliament to confirm First Deputy Foreign Minister Andrei Sybiha as the country's new foreign minister. The move comes as part of the largest reshuffle of Ukraine's government after its conflict with Russia began in 2022. The resignation of the Foreign Minister Dmytro Kuleba was accepted by the parliament, along with the resignations of 2 deputy prime ministers and several ministers in the last 2 days. Ukraine said its forces had shot down 60 out of 78 drones launched by Russia in an overnight offensive on Thursday. Ukraine claims that Russia used 1 ballistic Iskander-M missile. All right, let's take you to Singapore, where India's Prime Minister is speaking. जो लोग इतने सालों से भारत में काम कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ अपेक्षाएं होगी, कुछ शिकायतें होगी, लेकिन मैं सुखद आश्चर्य है कि वाहवाही के सिवाय यहाँ कोई स्वर नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संतोष है। और मैं अपना बात शुरू करने से पहले मैं क्वेक क्वांग मंग को कहना चाहूँगा, उनका मीठा पान। देखिए, हिंदुस्तान में जब भी पान की चर्चा होती है तो बनारस के बिना अधूरी रहती है। और मैं बनारस का सांसद हूँ। अगर आप पान खाने का सचमुच में मजा ले रहा है तो आपको अपना कोई इन्वेस्टमेंट काशी में करना चाहिए। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, अनेक विषयों पर बात करने का, आप सबको सुनने का मुझे अवसर मिला। मैंने देखा कि एक विषय जो प्रमुख रूप से नजर आ रहा है वो स्किल डेवलपमेंट का आ रहा है।
और भारत भी इंडस्ट्री 4.0 को ध्यान में रखते हुए या सेमीकंडक्टर का क्षेत्र को देखते हुए हम स्किल डेवलपमेंट पर बहुत बल दे रहे हैं। भारत की आवश्यकताओं के साथ उसका संबंध एक ग्लोबल जॉब मार्केट के से भी जुड़ा हुआ है। अगर आपकी कंपनियां ग्लोबली क्या चल रहा है उसका एक अगर सर्वे करें, ग्लोबल डिमांड क्या है उसका अगर एक एनालिसिस करें और उसके अनुसार भारत में स्किल डेवलपमेंट के लिए आए तो ग्लोबल जॉब मार्केट को बड़ी आसानी से एड्रेस कर सकते हैं। ये मेरा तीसरा कार्यकाल है और आप में से जो लोग भारत से परिचित हैं उनको पता है कि 1962 के बाद 60 साल के बाद भारत में किसी सरकार को तीसरी बार देश की जनता ने सेवा करने का अवसर दिया है और दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों ने वोट कर करके इस सरकार को बनाया है। और उसका मूल कारण है कि 10 साल का इस सरकार के नीतियों पर विश्वास, उसकी नीयत पर विश्वास और देश को जिस दिशा में हम ले जा रहे हैं, देश में जिस ऊंचाई को प्राप्त करने का हम प्रयास कर रहे हैं, वो भारत के सामान्य मानवीय के एस्पिरेशंस के अनुकूल है और तब जाकर के इतना बड़ा देश आपके साथ चलता है। यहाँ एविएशन सेक्टर के लोग हैं, दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन सेक्टर कहीं है तो भारत में है और हम भी चाहते हैं कि बहुत तेजी से एविएशन के लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एमआरओज की जरूरत है, वो हमारी प्रायोरिटी का भी एक क्षेत्र है। और इसलिए मैं चाहूंगा, अब जैसे सिंगापुर एयरलाइन का कहना है कि हमें जरा कनेक्टिविटी के लिए नए नए डेस्टिनेशन मिले, बहुत स्वाभाविक है, लेकिन मैं ये भी चाहूंगा कि आप इतना छोटा विचार मत रखिए। आप आइए, नए एयरपोर्ट के मैदान इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से आइए, डेस्टिनेशन भी ले जाइए, एक विन विन सिचुएशन बनेगी। एयरपोर्ट का निर्माण भी आप करेंगे, डेस्टिनेशन का अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगा। तो हम उस प्रकार से एक पैकेज बना करके चल सकते हैं, क्योंकि भारत में शायद मुझे बहुत ही निकट भविष्य में 100 से ज्यादा एयरपोर्ट बनाने होंगे। यानी अपने आप में एक बहुत बड़ा मिशन है, क्योंकि जिस प्रकार से मेरा यहाँ एविएशन सेक्टर का ग्रोथ है और जिस प्रकार से एस्पिरेशनल सोसाइटी के ये जो मांग है, आज मैं उसको कैटर नहीं कर पा रहा हूं, हम कम पड़ रहे हैं, हमें बहुत बड़ी आवश्यकता है। उसी प्रकार से आज खुशी की खबर तो है ही, एयर इंडिया का आपके साथ यहाँ मर्जर होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम हुआ है। लेकिन ये भी हम सोचे कि भारत विद इन इंडिया डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक के लिए हम चाहते हैं कि कंपटीशन की स्थिति बने, अधिक कंपनी आए। आज वो स्थिति नहीं है, बहुत पूरा स्काई ओपन पड़ा है ये। और मैं चाहूंगा कि आप में से जो कंपनियां उस दिशा में भी आगे आना चाहती हैं तो उसके लिए भी अवकाश है। एनर्जी सेक्टर में यहां पर काफी चर्चा हुई, ग्रीन हाइड्रोजन की, अमोनिया की। हमने पूरी दुनिया को एक वादा किया है
और हम ग्लोबल वार्मिंग को जो चैलेंज मानते हैं, उसमें हम सिर्फ अपनी संवेदना व्यक्त कर करके अटकने वाले नहीं है, हम सॉल्यूशन देने वाले लोग हैं। और हमने 500 गीगावाट का लक्ष्य टारगेट किया है और 2030 तक मुझे करना है। और उसमें मैं न्यूक्लियर की तरफ भी उतना ही जाना चाहता हूं, हाइड्रो पर भी जाना चाहता हूं, सोलार पर भी जाना चाहता हूं, विंड पर भी जाना चाहता हूं। उसी प्रकार से हमने बायोफ्यूल की पॉलिसी बनाई है, उसकी दिशा में भी एक बहुत बड़ा काम। और आपने G20 समिट में भी हमारे जो आउटकम है उसमें बायोफ्यूल की बात आपके ध्यान में आई होगी। भारत उसको लीड करना चाहता है। मैं चाहूंगा ऐसे अनेक क्षेत्र हैं एनर्जी से जुड़े हुए, जिसके कारण ग्रीन जॉब की पूरी संभावना है, उसके लिए भी हम काफी इनिशिएटिव ले रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप आइए। हम देश में दूसरे प्रकार से भी एनवायरनमेंट को एड्रेस करना है, जैसे हमारी स्क्रैपिंग पॉलिसी। ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं सरकार के सारे पुराने व्हीकल स्क्रैप करने की दिशा में जा रहा हूं। इतने बड़े देश में सारे पुराने व्हीकल स्क्रैप होना है, इतना बड़ा काम है। अगर आपकी कंपनियां मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करें या खुद इस दिशा में आए, और उसके कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत बड़ा नया मार्केट बनेगा। जैसे मेरे मन में है कि मेरे देश की मेरी पहली प्रायोरिटी सारे एम्बुलेंसेस, जितने पुराने एम्बुलेंस हैं, उन सारे एम्बुलेंस को स्क्रैप कर देना और उन सबको नए, और वो भी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल भी हो और हमारे जो रेगुलर जिस प्रकार का फ्यूल का उपयोग करते हैं, ताकि कभी एम्बुलेंस को रुकने की नौबत ना आ जाए। अब आप कल्पना कर सकते हैं हिंदुस्तान जैसे इतने बड़े देश में कितनी बड़ी आवश्यकता होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो स्क्रैपिंग का एक ऐसा बड़ा क्षेत्र है, अगर आप वहां की कंपनियों को फाइनेंस की मदद कर सकते हैं और थोड़ा शुरू में, क्योंकि एक प्रकार से ग्लोबल गुड के लिए है, ये एनवायरनमेंट की दृष्टि से बहुत बड़ा काम है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर के रूप में। आप जानते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं, रिफॉर्म के क्षेत्र में मेरी सरकार बहुत प्रतिबद्ध है और हम रिफॉर्म हमारे देश की आवश्यकता, हमारे देश के भविष्य को ध्यान में रख के कर रहे हैं, लेकिन हम ग्लोबल स्टैंडर्ड को मीट करने वाले रिफॉर्म्स भी कर रहे हैं। और रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म करके संकल्प को लेकर के हम चल रहे हैं। और जैसा गौतम जी ने उल्लेख भी किया मेरे लास्ट भाषण का, मैं तो कहूंगा हम रिफॉर्म करेंगे, आप परफॉर्म कीजिए। अवसर ही अवसर है और इसलिए मैं आप सबको, और आप जानते हैं जहां तक पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया में हमारा जितना है हिस्सा, पहली बार हम उस स्थिति पर पहुंचे हैं कि हमारे पॉपुलेशन का जितना परसेंटेज है उतना ही परसेंटेज, उससे +1 हम ग्लोबल गुड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यानी एक वैश्विक जिम्मेवारियों को संतुलित रूप से निभाना, ये बहुत कम लोग कर सकते हैं, जो आज इतना बड़ा भारत देश कर रहा है। तो मैं मानता हूं कि इसको आप आगे जाकर के अपने फायदे में भी कैसे बदल सकते हैं। आप देखते हैं फिनटेक की दुनिया में भारत के पास टैलेंट भी है, उसका लाभ तो मिलेगा, लेकिन भारत के लोग टेक्नोलॉजी के एडॉप्ट करने में कितने तेज हैं। आज फिनटेक की दुनिया में हमारा यूपीआई, फाइनेंशियल डिजिटल ट्रांजैक्शन, दुनिया में जितना रियल टाइम ट्रांजैक्शन होता है उसका 50% अकेले इंडिया में होता है। इसका मतलब ये ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें, इसका मतलब ये हुआ कि फिनटेक की दुनिया में अगर ग्लोबल लीडर बनना है तो भारत को केंद्र बिंदु बना करके बड़ी आसानी से आप फिनटेक की दुनिया में आप आगे आ सकते हैं।
स्टार्टअप के अंदर हमने काफी रिफॉर्म की है। इस बजट में भी हमने स्टार्टअप को काफी रिलैक्सेशन दिए हैं। भारत में टियर 2, टियर 3 सिटी में भी बहुत तेजी से स्टार्टअप ग्रो कर रहे हैं। 10 साल के भीतर भीतर हम करीब 10 साल पहले 100 स्टार्टअप थे, आज करीब करीब 100,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप है। बहुत बड़ी मात्रा में ग्लोबली लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और सक्सेसफुल स्टोरी है कि बहुत बड़ी मात्रा में उसमें से यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आपके यहाँ जो फाइनेंस के वर्ल्ड से जुड़े हुए लोग हैं, भारत के स्टार्टअप की दुनिया को अगर तराशेंगे तो उनके सामने बहुत बड़ी संभावना है। हम बहुत एग्रेसिवली सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जा रहे हैं। अब तक करीब 5 कंपनियां ऑलरेडी अपना काम शुरू कर चुकी हैं, आगे भी औरों की संभावनाएं हैं और हम पूरी इकोसिस्टम को लाने वाले हैं। हम कोई एक छोटा सा टुकड़ा एक आध हिस्सा करके अटकने वाले नहीं है। भारत के पास टैलेंट है। आज दुनिया में जितने भी चिप्स हैं, अगर उसका राइटिंग का काम है तो सॉफ्टवेयर का काम है, वो सब हिंदुस्तान में हो रहा है। सब बड़ी कंपनियों के रिसर्च यूनिट वहीं पर है। अब हम चाहते हैं कि हम खुद ही यहाँ पर उस दिशा में आगे बढ़े, तो आपके लिए वो भी एक बहुत बड़ा स्कोप है। भारत में एक स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, लेकिन हम हमारी नीतियों में प्रिडिक्टेबल नीतियां लेकर के चल रहे हैं, लेकिन प्रोग्रेसिव पॉलिसी लेकर के भी चल रहे हैं। हम दुनिया में जो भी संभावना है उन नीतियों को और हर एक के लिए काफी ओपन हो, कोई सीक्रेसी और फिर बाद में जाकर के कुछ दूसरा और फिर कोई तीसरी डेफिनेशन, हम उस दिशा में जाने वाले लोगों में से नहीं है। एंड एक ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ आज हम दुनिया के सब लोगों को अपनी बात बता रहे हैं। आज जब मैं सिंगापुर में इतने बड़े महत्वपूर्ण फोरम में बैठा हूं, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत तो प्रगति कर रहा है, लेकिन भारत में जो सरकार है, वो सरकार पिछले 10 साल में जो काम किया है उससे 3 गुना काम इस 5 साल में करने के मिजाज से काम कर रही है। वो विश्वास लेकर के हम कर रहे हैं। अभी मेरी सरकार को 100 दिन नहीं हुए हैं, लेकिन 100 डेज के अंदर सिर्फ हमारे जो नीति निर्णय हुए हैं, शायद दुनिया के किसी देश में 5 साल में जो निर्णय नहीं हो सकते होंगे, वो मेरे 100 डेज में हुए हैं। यानी ये हमारी स्पीड है। स्केल भी आप कल्पना कर सकते हैं। सिर्फ हमने गरीबों के लिए घर बनाए, 4 करोड़ घर। अब ये यानी कितने सिंगापुर बन जाए, 4 करोड़ घर, यानी ये स्केल है। हमारे यहां करीब 100 सिटीज मेट्रो बनने वाला है। कितना बड़ा काम है। हमारा अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है। बहुत तेजी से हमारे यहाँ ग्रामीण जीवन अर्बनाइजेशन की तरफ। अब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा काम है। नए सिटीज की हमारी जरूरत है, वो एक बहुत बड़ा काम है। यानी मैं कहता हूं कि स्काई इज द लिमिट वाली व्याख्या भी भारत के लिए छोटी पड़ती है, क्योंकि हम तो स्पेस में भी उतना ही काम कर रहे हैं। स्पेस में आज दुनिया में हमने जिस प्रकार से काम किया है और स्पेस को हमने ओपन अप कर दिया है। मेरे यहाँ पॉलिसी में अब स्पेस को हमने सरकारी एक इकाई के रूप में नहीं रखा है, इसको हमने ओपन अप किया है। आज सिर्फ स्पेस में मेरे यहाँ 200 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं और 22-25 साल के बच्चे खुद अपने सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। यानी आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना तेजी से विकास हो रहा है। और इस विकास की यात्रा में मैं आप सबको भागीदार बनने के लिए निमंत्रण देता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सबने समय निकाला। आप में से बहुत से साथी हैं जिनको कभी न कभी मुझे मिलने का अवसर मिला है। कुछ लोगों से सामूहिक मिला हूं, कुछ लोगों से व्यक्तिगत मिला हूं। जब मैं सिंगापुर में आप सबसे मिलता हूं तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं किसी
नए लोगों को मिल रहा हूं या नई बात सुन रहा हूं। इतना हमारे बीच में, और शायद किसी एक सरकार के साथ इतना निकट ओपन नाता बन जाए, ऐसा बहुत रेयर होता है, जो आज मैं देखता हूं कि सिंगापुर के बिजनेस वर्ल्ड का भारत की सरकार के साथ है। ये मेरे लिए सबसे बड़े संतोष की बात है कि आप सबको लग रहा है कहा यार ये सरकार हमारी है, ये सरकार हमारा सुनती है, ये सरकार में हम खुलकर कुछ कह भी सकते हैं। ये नाता जो है वो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, और इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि अवसर है, अवसर को जाने मत दीजिए, और जितने भी नए क्षेत्रों में आप आना चाहते हैं मैं तैयार हूं। कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे कि जिसमें शायद हमारे पास नीति नहीं होगी, आप लेकर के आइए, मैं नई नीति बनाने के लिए तैयार हूं। लेकिन भारत संभावनाओं का क्षेत्र है, इन संभावनाओं के क्षेत्र को आप अपने नसीब के लिए उपयोग कीजिए, और आपके लिए फिर कभी कोई रुकावट नहीं होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं फिर एक बार आप दोनों महाशय यहाँ समय निकाल करके आए, मैं आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। You're listening to India's Prime Minister Narendra Modi's address to business leaders during his visit to Singapore. Right, moving on for now, Australia's Defence Minister Miles and Foreign Minister Penny Wong hosted their Japanese counterparts for the 11th Australia-Japan 2+2 dialogue in Victoria. Japan and Australia agreed to increase joint military training exercises. During the meeting, Australia expressed its support for Japan's sovereignty in the Indo-Pacific region. We did speak about the recent incursions by the PLA into Japanese sovereign territory, and we certainly expressed our support for for Japan's sovereignty in that moment, and it really underlined our shared commitment to asserting the rules-based order in the Indo-Pacific, in our neighbourhood. So much of what both of our defence forces are doing is ensuring that what we understand as the rules-based orders, concepts like freedom of navigation, the UN Convention on the Law of the Sea, but also countries' territorial integrity, are upheld and maintained. To Africa now, heavy rains have been lashing Niger since June. The rains have caused massive flash floods and affected more than 700,000 till date. As of Wednesday, the floods have caused the deaths of about 273 people.